Hello student, I am Ashish Chawla and today we continue the same topic, that is surds. In this class we discuss about the rationalization of surds. So first of all we discuss about the rationalizing. Let's say मेरे पास एक सर्ड है, let's say S1, और इसको मैंने एक सर्ड S2 से मल्टीप्लाई किया so that I get a rational number. तो S2 जो सर्ड है वो S1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा. क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे एक रैशनल नंबर मिल रहा है. S2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ S1, और कन्वर्सली भी बोल सकते हो कि S1 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ S2, सर्ड S2. क्लियर? तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब यही हुआ कि इस सर्ड को मैं एक पर्टिकुलर सर्ड से मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे एक रैशनल नंबर मिले. तो जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो एक रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा. तो S2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द S1, और उल्टा भी बोल सकते हैं कि हम जो S1 है इट इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द S2. नाउ व्हाट डू मीन बाय रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है? रैशनलाइजेशन, देखिए हमारे पास एक सर्ड है और सर्ड को अगर मैं पर्टिकुलर, लेट्स से आई हैव अ सर्ड, इफ आई मल्टीप्लाई दिस सर्ड विद सुटेबल रैशनलाइजिंग फैक्टर to get a rational number, this process is known as rationalization. Conversion of a surds into a rational number by multiplying with a suitable rationalizing factor is known as a rationalization. एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मेरे पास एक सर्ड है √3. अगर इस √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूं तो I get √3 multiplied by 3, so I getting 3. 3 is a rational number. So the rationalizing factor of √3 is √3. Let's see, this is your surd, this is your surd, and this is your rationalizing factor. इस सर्ड √3 को अगर मैं इस rationalizing factor that is √3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 3. That is a rational number. So √3 is your surd and √3 is your again a rationalizing factor. Let's say take one more example. What is the rationalizing factor of √12? So what is the rationalizing factor of √12? √12 को पहले हम देखेंगे कि इधर कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई. So √12 can be written as 2 into 2 into 3. So we are able to make the pairs of 2. So 2 is coming outside, 2 under √3. So √12 can be written as 2√3. So the rationalizing factor of 2√3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें रैशनल नंबर मिल जाए? और यहाँ पे √3 है तो हम इसको √3 से ही मल्टीप्लाई करें जिससे √3 into √3 हमें क्या मिलेगा? 3. So 2, 3 into 3. So we are able to make the pairs of 2. So I getting 2 into 3, that is 6. So this is the rationalizing factor and this is our surd. And here I am getting a rational number. If the surd is in the form of nth root of a, then its rationalizing factor is a raised to the power 1 minus 1 upon n. If nth root of a is a surd, then its rationalizing factor is a raised to the power 1 minus 1 upon n. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे क्यूब रूट ऑफ 5 है, इसका अगर मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर देखना है तो देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल देन इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर इज 5 raised to the power 1 minus, here the value of n is 3, so 1 minus 1 upon 3, so which is equals to 5 raised to the power, I take 3 LCM, so 3 minus 1, that is equals to 5 raised to the power 2 by 3, which is equals to cube root of 5 square, that is cube root of 20. इसको हम एक दूसरे तरीके से और कर सकते थे. क्यूब रूट ऑफ 5 है, सो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे एक रैशनल नंबर मिल जाए. सो क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 3 है, ओके, तो पहली बात तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इंडेक्स 3 ही रखना पड़ेगा. दूसरी चीज, अब मैं चाहता हूं कि ये
क्यूब रूट का साइन हट जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रेडिकेंड के जो अंदर जो नंबर आ रहे हैं उसकी 3 3 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। सो 5 की भी मुझे 3 3 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो एक 5 तो ऑलरेडी है, तो अगर मुझे इस 5 को बाहर लाना है तो मुझे 3 5 अंदर चाहिए होंगे। तो एक 5 तो ऑलरेडी अंदर है, तो इसके अंदर मुझे 2 5 और रखने पड़ेंगे, तभी जाके इनका पेयर बनेगा। 3 की ग्रुपिंग हो जाएगी। एक 5 तो इसका, वो 2 5 इसके। So I am getting simply 5. As I make the pair of 3, simply I get 5. That is a rational number. So this is our rationalizing fact. So this is our surd. इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से भी सॉल्व। नाउ लेट्स सी, अभी तो हम एक सिंगल सर्ड्स की बात कर रहे थे। नाउ वी टॉक अबाउट द binomial surds. How we can rationalize the binomial surds. The binomial surds are generally used in the form of a plus root b, a minus root b, or root a plus root b, or simply root a minus root b. So if I talk about the rationalizing factor of a plus root b, a plus root b का जो rationalizing factor होगा, that is the conjugate pair, a plus root b का rationalizing factor होगा a minus root b. Keep the value same, that is a, root b, but just change the sign. Here it is plus, so this should be minus. So this is the rationalizing factor of a plus root b. You can apply the formula of a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So this is our a and this complete is your b. So a square minus b ka square. So a square root b ka square, simply b. So the answer is a square minus b. So we remove the radical sign. So it becomes simply a rational number. In the same way, so what is the rationalizing factor of a minus root b? The rationalizing factor of a minus root b is, just change the sign, minus, we have to write plus. And what is the rationalizing factor of root a plus root b? Just change the sign, root a minus root b. Same way, what is the rationalizing factor of root a minus root b? Just simply change the root a plus root b. Now let's solve some problem. Rationalize 1 upon 7 plus root 3. So we have to multiply with the conjugate pair. 7 plus root 3 है, तो इसको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 7 minus root 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 1 into 7 minus root 3 becomes 7 minus root 3. So 7 plus root 3 into 7 minus root 3, a square minus b का फॉर्मूला लगा देंगे, 7 का स्क्वायर minus root 3 का स्क्वायर. So I am getting 7 minus root 3 upon 49 minus 3, that is 7 minus root 3 by 46. So this is the rationalization. डिनोमिनेटर में रैशनल की टर्म आ रही है और यू कैन से सर्ड फॉर्म आ रही है, तो उसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर. लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल. Simplify 4 root 3 minus 4 upon root 3 plus 1 minus 2 minus root 3 upon 2 plus root 3. So this expression contains two terms. So we have to first rationalize the first term. So here the root 3 plus 1 is there. So we have to multiply both the sides with the root 3 minus 1. Here 2 plus root 3 is there. So I have to multiply both the sides with 2 minus root 3.
नीचे 2 प्लस रूट थ्री है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Now here I take 4 common, root 3 minus 1 into root 3 minus 1. इधर हम a plus b into a minus b का फॉर्मूला, that is a square minus b square root 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ये 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे वापस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, that is a square minus b square. So 4 here a minus b, again a minus b, तो a minus b का होल स्क्वायर, so a square plus b square minus 2ab. So root 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 minus here again a minus b का होल स्क्वायर, that is a square plus b square minus 2ab. So 2 का स्क्वायर 4, root 3 का स्क्वायर 3. So 4 times 3 plus 1, that is 4 minus 2 root 3, 3 minus 1, that is 2 minus 4 minus 3, that is 1. 4 plus 3, 7 minus 4 root 3. So here 4 and 2 are get cancelled 2 times. I have to multiply 2 into 4, that is 8. 2 into minus 2 root 3, that is 4 root 3. Minus times 7 minus 4 root 3. So I open the bracket, 8 minus 4 root 3 minus 7 plus 4 root 3. So 4 root 3 get cancelled. 8 minus 7, I simply get 1. So the answer is 1. Now let's take another example. If x is equals to 7 plus 4 root 3, then find the value of root x plus 1 upon root x. So let's see how we can solve this. So root x plus 1 upon root x की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो इसको फाइंड करने से बेटर है कि हम पहले इसका स्क्वायर निकाल लें, क्योंकि इसका रूट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. जब हम 2ab करेंगे तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली गेट 2. सो in order to find the value of root x plus 1 upon root x, first of all we have to find the value of x plus 1 upon x plus 2. Okay, so x we know that this is 7 plus 4 root 3, so we find 1 upon x. So 1 upon x is 1 upon 7 plus 4 root 3. इसको हम रैशनलाइज करेंगे, 1 upon 7 plus 4 root 3 रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 minus 4 root 3 से. So 1 into 7 minus 4 root 3, 7 minus 4 root 3. यहाँ पे a plus b into a minus b का फॉर्मूला लगा देंगे, that is a square minus b square. So 7 minus 4 root 3, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 into 3, that is 48. So 49 minus 48, that is 1. So the answer is 7 minus 4 root 3. So the value of 1 upon x is 7 minus 4 root 3. So I am putting the value of 1 by x in this expression. So root x plus 1 upon root x, the whole square, is equals to x plus 1 upon x plus 2. So the value of x is 7 plus 4 root 3. What is the value of 1 upon x? 7 minus 4 root 3 plus 2. 4 root 3 get cancelled. 7 plus 7, 14. 14 plus 2, 16. So the value of root x plus 1 upon root x, the whole square, is 16. So which implies that the value of root x plus 1 upon root x is 4. That is square root of 16, that is 4. So the answer is 4. Now let's take the another example. If x is equals to root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2 and y is equals to
root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2. Then find the value of x square plus xy plus y square. So हमें x दे रखा है, हमें y दे रखा है, and we have to find the value of x square plus xy plus y square. So this expression x square plus xy plus y square can be written like this, that is x square plus 2xy plus y square minus xy. इस xy को मैंने 2xy बना दिया. अब मैंने xy ऐड किया है तो I have to subtract as well. So by doing this become a perfect square, that is x plus y का whole square minus xy. So first of all I have to find the value of x plus y. So let's how we can find the value of x plus y. So x is root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2 plus y, that is root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2. इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम मिलेगा हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, that is root 3 plus root 2 into root 3 minus root 2. इस एक्सप्रेशन को अगर हम root 3 plus 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. So we are getting root 3 minus root 2, which is multiplied with the numerator. So root 3 minus root 2 into root 3 minus root 2 become root 3 minus root 2 का whole square. Now इस expression को root 3 minus root 2 से divide किया तो root 3 minus root 2 are get cancelled. I am simply getting root 3 plus root 2 into root 3 plus root 2 का whole square. So just open the brackets, a minus b का whole square, a square plus b square plus 2ab. जब 2ab करेंगे तो root 3 into root 2 हो जाएगा root 6. Same way here, a square plus b square plus 2ab. Here a plus b into a minus b, that is a square minus b square, that is 3 का root 3 का square 3 minus root 2 का square, that is 2. 2 root 6 and 2 root 6 get cancelled. 3 plus 2 5, 5 plus 5, that is 10, divided by 1, that is 10. So the value of x plus y is 10. Now if I multiply x into y, so the value of x is root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2, and y is root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2. So these two are get cancelled and these two are get cancelled. So simply I get 1. So the value of xy is 1. Now just simply put the values in this expression. So I get x plus y की वैल्यू 10 निकाली हमने, 10 का स्क्वायर, xy की वैल्यू 1 निकाली. So 10 square is 100 minus 1, that is 99. So the answer is 99. Now let's do the another problem. Under root of 34 minus 24 root 2 multiply with 4 plus 3 root 2 की वैल्यू क्या होगी? Now in order to solve this problem, first of all we have to find the root of this expression. So let's solve this first one. 34 minus 24 root. Assume कर लेते हैं कि इसका जो रूट निकल के आएगा, it is root p minus root q. First of all assume that the root of this expression is root p minus root q. Now squaring on both sides. दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा. So we are getting 34 minus 24 root 2, which is equals to root p minus root q का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. नाउ अब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा रैशनल पार्ट p प्लस क्यू है और यहाँ पे 34 है. सो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 34. यहाँ पे हमारी रैशनल टर्म है माइनस 24 रूट 2 और यहाँ पे माइनस 2 रूट पी क्यू. सो माइनस 2 रूट पी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 24 रूट 2. माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 24 कैंसिल. सो आई गेट रूट पी क्यू इज इक्वल्स टू 12 रूट 2 और पी क्यू इस 12 को अगर हम अंदर ले जाएं तो इट बिकम्स 2 इंटू 12 इंटू 12. सो द रूट पी क्यू is equals to 12 का square 144 into 2, that is 288. So the value of p into q is
288. So here the sum of P and Q is 34 and the product of P and Q is 288. We have to think of two numbers whose their sum is 34 and the product is 288. So the two numbers are 16 and 18. Let's say P is 18 and Q is 16. So their product is 288 and their sum is 34. So the square root of 34 minus 24 root 2 can be written as root 18 minus root 16, which can be written as root 18 is 3 root 2 and root 16 is root 18 को मिल सकते हैं 2 into 3 into 3, तो 3 का पेयर बन जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा. रूट 16 हम जानते हैं 4 होता है, तो 3 root 2 minus 4. सो हमें जो एक्सप्रेशन सॉल्व करना था अब उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो अंडर रूट 34 minus 24 root 2 multiply with 4 plus 3 root 2. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज 3 root 2 minus 4 multiply with 4 plus 3 root 2. So this is our a plus b and this is our a minus b. So the answer is a square minus b का square. 3 root 2 का square that is 18 and root 4 का square 16. So 18 minus 16 that is 2. So the answer is plus 2. Now let's see how we can rationalize a trinomial surds. A surd containing 3 terms, उसको हम किस तरह से rationalize करेंगे. Example, rationalize 1 upon 5 plus root 2 plus root 3. Let's say इसको हमें rationalize करना है. So let's see how we can rationalize. हम क्या करेंगे, इसको 5 को सेपरेट रहने देंगे और रूट 2 और रूट 3 को हम एक टर्म अज्यूम कर लेंगे. सो दिस इज अवर a प्लस बी. सो a प्लस बी है तो इसको हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर. सो 5 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का करेंगे मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर और रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे. So we are getting 5 minus root 2 minus root 3, नीचे आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab दैट इज 2 root 6. So 5 minus root 2 minus root 3, 25 minus 5 that is 20 plus 2 root. Now अभी हमारा बाइनोमियल में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 20 प्लस 2 रूट 6 है, ट्वेंटी प्लस 2 रूट 6 है, इसको हम रेशनलाइज करेंगे. इसको 20 माइनस 2 रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. 20 माइनस 2 रूट 6 से इट इज़ बेटर टू टेक 2 कॉमन फर्स्ट. सो 5 माइनस रूट 2 minus root 3. First I take 2 common, so it becomes 10 plus root 6. So in order to rationalize, I have to multiply with 10 minus root 6 because 2 is already rationalized, so I have to multiply with 10 minus root 6 only. So 5 minus root 2 minus root 3 is multiplied with 10 minus root 6, and here that is 2. A plus b into a minus b, that is a square, that is 10 square, root 6 का square. So simply multiply 5 with 10 minus root 6, 5 into 10, that is 50, 5 minus root 6, 5 root 6, minus root 2 into 10, so minus 10 root 10, minus root 2 into minus root 6, that is minus root minus minus plus 12. Now root 3 into 10, so minus 10 root 3, minus root 3 into minus root 6, so plus root 18 whole divided by 200 minus 6, that is 94. So
Finally, 50 minus 5 root 6 minus 10 root 2. Root 12 can be written as 4 into 3 and 4 root is 2. So I get 2 root 3 minus 10 root 3 and root 18 can be written as 3 root. So 94 into 2 I am getting 188. So 50 minus 5 root 6 minus 10 root 2 plus 3 root 2 I am getting minus 7 root 2. 2 root 3 minus 10 root 3 I am getting minus 8 root 3 upon 188. So this is the rationalization of a trinomial surd. Thank you.